Assalamu alaikum and good evening. Today this session is very much important, that is related to about exit management in HR. आमतौर पे ये समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि एग्जिट मैनेजमेंट या एग्जिट से क्या लेना देना, कि लोग तो जा रहे हैं छोड़ के, तो जो छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो एग्जिट मैनेजमेंट आजकल के जो मॉडर्न एचआर है, जो इवॉल्व होता चला जा रहा है, उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके एम्बेसडर हैं और आपके बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर सकते हैं, आपके कल्चर के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है या ऑर्गेनाइजेशन की जो रेप्यूट है या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, उसके पर्सपेक्टिव से भी। इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। टुडे वी आर हैविंग मैम अंबर नवीद, who is a seasoned HR professional, and we are requesting her to please facilitate this session. तो मैम अंबर के मैं हवाले ये फोरम करता हूँ ताकि वो आज का सेशन स्टार्ट करें और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कशन मोड में लेके जाते हुए इस सेशन को कंडक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mansoor Saab. Assalamu alaikum, everyone, and a very good evening. I hope you all are ready for today's session. As Mansoor Saab said, this session is very important. That is about exit management. So exit management, most of you, those who are already in HR, they know what is exit management and how important it is. So before we start, just think about your, I don't want to discuss with me, but write it down in your, on your notepads, or आप अपने ज़हन में सोच लीजिए that what do you think exit management is, and हर एक के लिए different होता है, तो उसमें सबसे important क्या चीज़ है in exit management which you want which you want to be addressed. So kindly write it down in the chat box so that I should know that these are the areas on which you want discussions or anything like that. So chat box is open. Just write down your query, or what do you think is important in exit management, jiske upar you want discussion. So I'm going to share my PPT and then we start, and then we will keep on discussing this topic. Exit management and the process. What is the process of exit management? Exit management or employee offboarding. Pehle hum discuss karte rahe onboarding. What is onboarding? Onboarding is when the employee is hired. So that is the onboarding process. So onboarding ke baad when somebody is leaving the company, that is called exit management or offboarding. So offboarding is a process to manage the full and final settlement of employees when they exit from an organization. When an employee resigns, retires, or is being terminated from work, the required paperwork and formalities associated with employee exit need to go through a systematic process. That is called exit management. किस टाइम पे होती है exit management? जब आप resign करते हैं, या रिटायरमेंट होती है, या किसी को टर्मिनेट किया जाता है फ्रॉम द वर्क और उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, डिफरेंट वे। बट एग्जिट मैनेजमेंट तब होती है इन तीन प्रोसेस, इन तीन वजूहात की वजह से हो सकती है। नीड क्या है इसकी? मतलब हम कोई भी चीज करते, लाइक टुडेज सेशन इज ऑन एग्जिट मैनेजमेंट, तो व्हाट्स द नीड ऑफ एग्जिट मैनेजमेंट? हम नहीं करते एग्जिट, बस रिजाइन किया, थैंक यू सो मच, अब खत्म कर दें। उसका क्या नुकसान है, और अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर इसको हम कंडक्ट करते हैं तो उसका क्या फायदा है? तो व्हाट इज द नीड ऑफ इट? द पर्पस ऑफ एन एग्जिट मैनेजमेंट इन HRM
is to assess the overall employee experience within your organization and identify opportunities to improve retention and engagement. Having a clear set of standards in place when conducting exit interviews can also play an essential role in risk management. These are just few, these are not just few lines, these are very important. हम आज जो business market है या जो corporate world है उसमें what are we looking for? We're looking for opportunities, we're looking for retention, we're looking for the employee engagement, and we are learning and developing ourselves for risk management. So this is one area which help us to identify those areas which will help us to attain all these things. The first and foremost focus is to know why the person want to quit the job. The reasons could be many, like better career opportunity, salary, work culture, or office location, but it's mandatory for your organization to know the reason and the right reason too. A company's positive approach towards an employee who wishes to quit will create a better work culture and encourage remaining employees to be more committed. दो तरीके होते हैं, या तो जो जा रहा है उसको आप खुशी से जाने दें, whatever the reasons are, except अगर आपसे terminate करें तो भी आपको exit तो उसका खुशी से ही करें. लेकिन these are few things which are important, that positivity is there. Your exit interview should be properly questioned, which will help you to develop the culture of your company in a way that जिसमें हम retention के ऊपर काम कर रहे हैं, employee engagement पे काम करें, हम risk management पे काम करें. These are three very important areas on which are the core areas of HR, and we want to work on these areas. So this process is very important to attain all these goals which we want to have all these three areas intact. Exit management किस तरीके से होती है? Termination of employment. Termination of employment फिर दो तरह से, एक आपका contract terminate हो गया, दूसरा terminate कर दिया गया, आपको terminate किया गया मतलब job से निकाला गया. Reason क्या बनी? There are different policies and procedures of the company. अगर उसके against कोई employee ने कुछ किया है तो can be terminated. Code of conduct हो सकता है. Any breach of contract can be the reason of termination of the job. Then redundancy. Redundancy is again, it's a complete topic which we should understand, that हम कब redundant हो सकते हैं और किसको redundancy के उसमें parameters में लाया जा सकता है. And then फिर redundancy के इनकी payments. Let's talk about termination. So before we start, जो मैंने तीन चीजें पहले आप लोगों से discuss की हैं जो important है, that one is employee engagement, the other is risk management, and another thing which is important which we should keep in mind while during today's session is exit interview. So these are the three areas on which we are going to have a talk on, that employee engagement, risk management, and exit interviews. Okay, so termination. Before we proceed, anyone, let me stop here. So termination से आपको क्या समझ में आता है? जैसे अभी हमने discuss किया, there can be two kind of termination. So anyone of you who want to contribute over here about termination from the job or terminated from the job, is it positive or is it negative? Impression क्या देती है ये tagline, or this is that the person has been terminated from the job. So is it a positive notion है या negative notion है? Who wants to contribute? If you want to speak, you're most welcome. If you want to write, you can write as well. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आपने टर्मिनेशन में कहा है. This is a positive way. जैसे I want to share my recent experience that we have terminated one of our employee, or that was in the breach of the contract.
बट व्हाट आई सजेस्ट बिफोर के व्हाट वी नीड टू डू कि अगर हम उसको बुलाएं, उसको ये चीज़ रियलाइज करवाएं दैट दिस इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वी वांट टू टर्मिनेट यू, ये चीज़ को रियलाइज करवाई जाए दैट दिस इज द डिसीजन ऑफ द कंपनी. बट जस्ट टू कीप यू ऑन अ सेफर साइड, अगर आप रिजाइन खुद दे दो. बट जो सीईओ थे उन्होंने कहा था वी नीड टू कन्वे दिस मैसेज टू एवरीवन इन द कंपनी दैट ही इज टर्मिनेटेड ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो दैट मैसेज शुड आल्सो नीड टू बी कन्वेड. तो अब इसको हम टर्मिनेट ही करेंगे. सो दिस इज अ पॉजिटिव वे इन कि बाकियों को क्या मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं, but might be it is a negative for that employee to whom we are giving the termination notice. बिल्कुल सही है। जो मेरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल यही है कि जब हम किसी को टर्मिनेशन कहते हैं तो नोशन हमारे पास मोस्टली नेगेटिव आता है, किसको हमने जॉब से टर्मिनेट कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? Exactly. Yes, so we have to discuss that कि being in HR how can we rectify these things, और उस because जब आप किसी को breach of contract तो है, but अगर उसको हमने terminate किया तो impression company का क्या जाता है, और उस जो हमारा employee है उसका क्या जाता है. So let's move on. Anyone else want to contribute? Okay, so termination, the exit management process may vary as a contract of employment will commonly come to an end following. क्या क्या reasons हो सकते हैं? Termination by the employer, dismissal, जिसे हम dismissal भी कहते हैं. Termination by the employee, resignation, by mutual agreement or contractual provision between the employer and the employee. तीन तरह की डिस्कशंस आ गई बीच में. टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर, लाइक जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मे बी द कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो भी आपकी जॉब, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया. मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको डिसमिस कर दिया गया या आपको टर्मिनेट कर दिया गया. एम्प्लॉय की तरफ से टर्मिनेशन कब होती है? जब वो रिजाइन करता है, रेजिग्नेशन पुट अप कर देता है, वट एवर द रीजन इज, मे बी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, whatever the reason is, वो रेजिग्नेशन दे देता है तो then it is a termination from the employee side by mutual agreement of contractual like अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म हो गया है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की तरफ से एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है. जैसे अभी शहबाज ने डिस्कस किया कि उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, बट दे डिस्कस विद द एम्प्लॉय, एंड इसको हम कहते हैं बेसिकली एक और टर्म जो यूज होती है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड रेजिग्नेशन. तो आप उसे forced resignation ले लेते हैं, या उसको आप you can give them the choice that we are going to terminate you, या breach of contract है, by policy we have to terminate you, but we can give you a chance and we can give you a choice that you can have you can put your resignation. अब उसके क्या फायदे और नुकसान है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. Now dismissal, सबसे पहले तो आप आ जाएं कि जी termination of the job or dismissal क्या है? Dismissal can be with or without notice, but must be for one of the following principal reasons to be fair: the conduct of the employee, the capability of the employee, redundancy, illegality. Dismissal should be determined in accordance with equity and the substantial merit of the case. This means that an employer must ensure that both the main reason for the dismissal and the procedural methods used to implement the dismissal will need to be demonstrably fair before an employment tribunal claim can be defended. Okay, this is very important. कि हम dismiss कर क्यों रहे हैं? Code of conduct है, उसकी वजह से एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा रहा है कि जी वो कोई ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसी चीज की है उसने जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसपे आप उसे 1 day के नोटिस पे यू कैन डिसमिस और टर्मिनेट द एम्प्लॉय. इसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी इंटैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैन बी एनीथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कंपनी, समथिंग व्हिच इज पर्सनल और व्हिच इज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है एज बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, जिसकी वजह से उसको डिसमिस किया जा रहा है. द केपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, द केपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट द रीजन जिसमें आप उसको 1 दिन के नोटिस के ऊपर डिसमिस कर दें, फायर कर दें या टर्मिनेट कर दें. इसकी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं.
Then redundancy का भी एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि redundant आप एक दिन में नहीं हो सकते. ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह हम उठें और HR डिपार्टमेंट कहे कि जी ये बंदा redundant है, आज इसको आप निकाल. So इसका भी प्रोसीजर फर्क है. Then illegality. If something which has done by the employee which is illegal, then there can be that person can be terminated with 1 day notice depending on the case or the illegality which has happened. उसके ऊपर डिपेंड करता है और case to case matter करता है. The employer must ensure that both the main reasons for the dismissal and the procedural method used to implement it, the dismissal will need to be demonstrably fair. ये जो आपका process or procedure, it should be very, very fair because so that the employer जो है, employee जो है, he can go to the tribunal claim, employment tribunal claim can be put on the organization. तो उसको defend करने के लिए your reasons of terminating the person on 1 day notice on code of conduct or illegality should be, you should have evidence to that. Same for redundancy and capability, जिसको हम performance management कहते हैं, उसका एक different procedure है, and इन दो चीजों का एक different procedure है. Code of conduct का procedure is different. Code of conduct में कोई ऐसी चीज हो सकती है which is not acceptable and an employee can be terminated on 1 day notice. Same goes for illegality. But the rest of the two needs proper process and procedures to bring to the point where an employer can terminate them. Then resignation. Now, resignation from employee can also be given with or without notice. An employee will not be in breach of their contracts if they resign without notice, where they allege that they have been constructively dismissed. All resignations should ideally be received by employers in a written form, as difficulties may arise where verbal notification only exists. This is particularly true where resignations are given in the heat of the moment following disagreement that may have arisen. It is always the case that the employer is expected take those steps necessary to ensure that they are as certain as they can be that the resignation is unambiguous on the part of the employee. दो चीजें इसमें हम डिस्कस करें कि रेजिग्नेशन कब दिया जा सकता है, 1 day notice पे, विद नोटिस और विदाउट नोटिस. और यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसीज हैं. एक जनरल पॉलिसी जो फॉलो होती है, दैट इज दैट इफ अ पर्सन इज रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑन 1 day notice, then he or she has to forego 1 month's salary and the leave, if there is some leave which is left, has to forego that and can leave the organization in 1 day notice. But there are few organizations, those who don't have such policies, and they require notice period which can from 1 month to 3 months. And it all depends on the kind of an organization where you're working and the policies and procedures and those policies which you have already signed at the time of your recruitment. So if you have signed at the time of your recruitment that you are going to give the notice period, and उसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज नहीं दी गई जिसमें आप 1 month सैलरी फॉरगो कर दें या आप उसमें अपनी लीव्स को फॉरगो कर दें, जब ऐसी कोई पॉलिसी आपने साइन नहीं की, then you cannot expect the organization to provide you such relaxation because it's not there in the policy. So that we have to think why at the time of recruitment. So as an HR personnel, those who are doing the recruitment and those who are a part of the onboarding, they should, whatever the policy of the exit, it is very important that वो आप उस employer को जरूर explain करें at the time of recruitment. So the person who is coming to the organization should know what is the policy of exit. कि उसके लिए उसको क्या, मतलब सोच के उसको पता हो कि मैंने 1 day notice पे करना है तो क्या उसके repercussions होंगे. And resignation without notice is different and with notice should be different. So resignation should be ideally received in the form of, in written form. But nowadays there are
it is all automated. HR is automated, so most of the resignations come on the portal. HRMS है या HRIS है, उसके ऊपर resignation दे दिया जाता है. But again, this is important that resignation should come in the form of in written form as well. Because कई दफा ऐसा वर्बल को तो कभी भी आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्बल जैसे हम डिस्कस करते वर्बल रेजिग्नेशन तो गुस्से में कोई भी कह सकता है. इफ देयर इज हीट ऑफ अ मोमेंट, यू हैव अ डिसएग्रीमेंट विद योर बॉस और व्हाटएवर द रीजंस आर, यू कैन से दैट आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो एंड आई रिजाइन. That resignation is not accepted, because resignation is a thoughtful process. It cannot be given on it is not given like this. So heat of a moment पे जो verbal resignation दिया जाता है उसको accept नहीं किया जाता. उसके लिए आगे दूसरा process है जो HR की responsibility है, that the HR personnel should discuss that that verbal resignation with that employee, that what was the reason of that verbal resignation, और जो भी उसका issues develop हो रहे हैं उन issues को कैसे address करना है, what are the areas. So वो आपके लिए, वो HR के लिए एक eye opener होता है. Yes, there is something going on, something wrong, maybe the environment of the culture, maybe the team management or something like that is not that healthy, that the person is resigning, or maybe the salary, whatever it is, can be one of the reason. But जो भी verbal resignation है उसकी कोई भी weightage नहीं होती और उसको consider भी नहीं किया जाता. So necessary steps इसके यही है कि उसको proper process है to address that kind of resignation. So third is your mutual agreement. Mutual agreement to terminate a contract are not as commonplace as other methods, but still meet the needs of the parties to a contract. There is therefore no dismissal in these circumstances, and employees will not be entitled to bring claims for unfair or wrongful dismissal. Typical example will include voluntary early retirement agreement and financial severance packages. Mutual agreement क्या है? Mutual agreement ये कि अगर आपका contract जो है वो आप contract पे हैं and the employer wants to finish that contract, and it discussed with the employee, and both support parties come to a conclusion where both of them want to finish that thing in a good way. तो आप उस contract को very mutual agreement के through terminate करते हैं, which is not, जिसमें आपको सब benefits मिलते हैं, जो भी एक employee के benefits होते हैं जो exit के ऊपर या resignation पे दिए जाते हैं, वो ही इस किस्म की mutual agreement पे भी किए जाते हैं, can be resignation as well. But dismissal के ऊपर वो चीजें नहीं provide की जाती हैं, क्योंकि जब dismissal या terminate किया जाता है job से, तो then there are other repercussions, जो आपको जो perks हैं या जो चीजें, जो benefits हैं जो employee को मिलने होते हैं, because when somebody leaves the organization तो वो hold हो जाते, वो नहीं मिलते. तो वो mutual agreement करने की वजह से employee can claim all those things which is the right of an employee who resigns. So typical example इसका क्या? early retirement. Early retirement में जब आप early retirement ले लेते हैं तो आपको amount जो आपका है gratuity है या आपके provident fund है, और there can be different agreements between the employer and the employee कि जितना time उसका रहता है उसकी, जो अगर for example 4 years का contract है और आप 1 year पहले उस contract को खत्म कर रहे हैं, तो the employer will provide salary for all 4 years जैसे normally किया जाता है, and then आप उसमें वो सारी जो चीजें required हैं, जो exit की जो rights हैं employees की, वो आपको provide किए जाते हैं. This is called the mutual agreement. So one is dismissal or termination, the other one is resignation, and the third is mutual agreement. These are the three areas on which we go for the exit management. So before we move on, because it's going to be a namaz break for 10 minutes, there are two in the chat. I have two messages. When any employee do breach of contract, an employer can terminate him or her. So should HR give him or her reference letter or experience letter or not? When an employee is terminated,
the companies don't give experience letter. Because जो experience letter है, again, it's the right of the employer to provide to those employees, those who are leaving the organization, in a right way, in a proper way, with the notice period, served notice period and all the requirements and policies and procedure intact. So जब आप उसे terminate करते हैं because of breach of the contract, तो आपको employment letter मिल सकता है, experience letter नहीं मिल सकता. There is a difference between the employment letter and the experience letter. Employment letter ये होता है कि आपने इस तारीख से इस तारीख तक इस कंपनी में काम किया, that's it. उसमें आपके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता. लेकिन एक्सपीरियंस लेटर में आपका रोल बताया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है, और आपको आगे आपकी स्किल के ऊपर लिखा जाता है. तो आपको एक्सपीरियंस लेटर, यू कैन नॉट आस्क फॉर एन एक्सपीरियंस लेटर. हाँ, एम्प्लॉयमेंट लेटर कैन बी वन थिंग. Another point is, it is the last impression of the employer that we keep in our head, and it shows the culture and gives the vibe related to the organization. Because of it, people create different perceptions for an organization. Very good. This is how exit management work. So when you are leaving, if you leave, if from employer side, if you get all the facilities and the employee is leaving very gracefully, so this is the impression which just हमने discuss किया, will help the other employees, those who are working in that organization, to retain their jobs and to stay in that company and feel motivated. So this is good comment on it. So now it's namaz break. Can we have? I just want to add something here. Employment letter is a letter जो आपको during the tenure या employment के tenure के दौरान अगर आप if you ask for anything, वो आपको तब मिलता है. Experience is that when you leave the organization. So the question was that कि अगर आप organization छोड़ रहे हैं या आपको terminate कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको experience letter मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें कुछ तो भी आपको नहीं मिलेगा. आपको employment letter ही मिल सकता है, उसमें सिर्फ तारीख लिखी होगी, इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपने इस कंपनी में काम किया. Mansoor sir, can we have 5 to 10 minutes break for namaz and then we'll join back? बिल्कुल ना. अच्छा, कुछ केसेस में देखा गया कि severity of the issue क्या है, उसकी बेस पे भी होता है. किसी के हरासमेंट का एक केस आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना. लेकिन कोई और इशू आ गया कि कोई मिसकंडक्ट, ग्रॉस लेवल का मिसकंडक्ट नहीं है, या कोई और चीज ऐसी आ गई है ना कि तो फिर मंसूर साहब, फिर टर्मिनेशन तो तब होगी ना जब इतनी चीज सख्त होगी तो हम उसे टर्मिनेट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. समटाइम ये भी होता है ना कि सीट खत्म हो गई, कुछ भी हो गया ना. हाँ, वो तो फिर उस पर रिडंडेंट हो जाएंगे ना, वो टर्मिनेशन नहीं होगी, वो रिडंडेंट होंगे. लेकिन रिडंडेंसी इसके लिए हम we need to inform employee. जब हम उनको हायर कर रहे होते हैं, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि अगर रिडंडेंट होती है आपकी पोजीशन, तो हम आपको फ्यूचर में कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं. ये कंडीशन मैंडेटरी होगी इसके लिए. जब हम रिडंडेंट करते हैं तो हम टर्मिनेट नहीं करते, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आता है. लेकिन वो हम इन्फॉर्म करेंगे ड्यूरिंग, वो हम इन्फॉर्म करेंगे, उसका आगे हम अभी डिस्कस करेंगे. प्रॉपर प्रोसेस है कि हाउ टू इन्फॉर्म अबाउट रिडंडेंसी. चले हम 7 बजे 10 मिनट. Anybody else have a question before we go for namaz? I had a comment. We were discussing about the termination कि हम उसके बाद experience letter भी नहीं देते, even reference letter. What I was expecting कि हम वो नहीं देंगे जिसमें performance और उनकी personality aspects या उनकी personal skills के बारे में बात होगी. But yes, as a professional, as a company, if we are professional, so I think that's their right. और हमें अगर वो बंदा जिस तरह का भी मिसकंडक्ट करके जा रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहा है, वी शुड बी प्रोफेशनल इनफ कि उसने जितना हमें सर्व किया है एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन, उसने अपनी जॉब पे जितना काम किया है उतना हम उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ जी आपने इतने से इतने टाइम तक हमारे साथ आप मौजूद थे. उसमें मेरा कमेंट आपको मायमा ये होगा that if a person is terminated because of code of conduct, so when you are giving them the experience letter, then you have to write that thing as well कि आप उसको क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी रीजन था, कैन बी हैरासमेंट है, जो भी है कर रहे हैं, तो अगर आप वो लिख देंगे तो उस एक्सपीरियंस लेटर का उसको कोई फायदा नहीं होगा. तो इसलिए वो नहीं दिया जाता, उसकी बजाय उसको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया जाता है जिसमें ये बता दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये शख्स हमारी कंपनी में काम कर रहा था. ठीक है. I think there's a difference in the terminology of what we are
Yes, it can be a reference letter or it can be, बिल्कुल yes, the name of the letter can be different, but this is how it is. Ji Shabazz? I agree with the last comment. I want to add, I was also once terminated from an organization, और मुझे उन्होंने experience letter दिया था और उसके ऊपर कोई ऐसा clause mention नहीं किया था why I was terminated, और as जैसे हम बाकियों के experience letter देते थे वैसे मुझे भी उसमें मिला था. लेकिन तो आपकी टर्मिनेशन इतनी वो नहीं होगी ना. breach of the contract पे थी, because I was the HR personnel for that department, और मैंने अपना खुद ही इंटरव्यू करके एक अपना मतलब वो था क्लोज रिलेटिव क्लॉज के अगेंस्ट जाके मैंने एक हायरिंग ठीक है. देखो, द क्लोज रिलेटिव को हायर करना इज नॉट दैट बिग जिसको आप ना कर सकते, बट इट्स अ गुडविल जेस्चर फ्रॉम द कंपनी वेयर यू आर वर्किंग कि उन्होंने आपको दिया था, अदरवाइज टर्मिनेशन पे नहीं देते. लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी में है कि यू कैन नॉट हायर द ब्लड रिलेटिव्स, तो फिर ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो ऑलरेडी हो गया. एग्जैक्टली. चलिए, थैंक यू वेरी मच. अभी हम रिज्यूम करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स. नमाज ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम सब लोग फिर बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच.
Okay, so let's start the session again. There is one comment that if we have given a warning letter and then that person goes on leave and come back, give his resignation letter, in that case, should we give an experience letter? Warning letter जब आपने उनको दिया हुआ है तो depending on the kind of act on which the person has got the warning. तो अगर वो warning code of conduct पे है या ऐसी चीजें, when he comes back with resignation, तो experience letter provide करने का जो हक है वो employer के पास है. If they want to give that, they can give, because he's giving the resignation. He's not you are not terminating. So इस scenario में the employer has the right to whether give the experience letter or not. Okay, now I'm going to share. I hope everybody is back. So I'm going to share my screen and we are going to move on now. Now, next is redundancy. A fair redundancy process should be followed where a genuine redundancy situation arises. Redundancy situation may be due to a reduction of the work for which the employee is engaged, where company premises are being relocated, or where perhaps a serious financial situation is arising, dictating early cuts in labor costs. A full, formal, and proper consultancy process should always be provided. Ideally, this should be supported by documents to show how the redundancy situation has arisen, outline clearly the criteria being used to select which employees are to be made redundant, consideration that has been given to finding alternative employment within the company or associated companies. So this is very important. जैसे हम कहते हैं कि जी the person become redundant, or the company has decided to say thank you to that person, or उसको resignation ले लिया या something like that. The process redundancy होती क्या है? There are different reasons for that. Which situation makes that? Maybe the employer, maybe the financial crisis, maybe the relocation, maybe the job which required 10 people, now they require 4 people. जैसे जो आपका project based work होता है, तो when we start the project, then you need more people. But when the project become stable, the number of employees become less. So there are different reasons जिसमें आप उसको redundancy पे लेके जा सकते हैं. Financial crisis is one thing, but whatever the reason is, the employees should be taken on board. उनको अपनी जो भी सिचुएशन है उससे आगाह रखना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर्मल प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोसेस शुड बी देयर कि आपको हाउ रिडंडेंसी सिचुएशन राइजन. सबसे पहले तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिचुएशन बनी कैसे, व्हाई this situation is there that you have to redundant few people from the organization. Like मैंने आपको example दिया, project है, जैसे project based work, project mature हो गया. जब start किया था project तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए थे. जब project mature हो गया तो number of employees की ज़रूरत कम हो गई. And जब बन गया project complete हो गया तो सिर्फ उसको execution के लिए और less number हो गए. तो this is one thing जिसमें आप उनको इस situation को आप वक्त से पहले उनको बताना बहुत ज़रूरी है. फिर outline clearly the criteria. भाई आप क्यों select हो? Like for example, they have selected a person कि इसको आपको हमें redundant करना है. तो reason क्या है? आपको हम क्यों redundant कर रहे हैं? Maybe financially, maybe mostly उनको redundant किया जाता है those who are on high packages, या जहाँ पे number of employees जिस department में ज़्यादा हो जाते हैं, department become heavy, तो उस तरह से reduce किए जाते हैं number during financial crisis. So the reason should be there. The reason should be given to the employee. उसको clarity होनी चाहिए कि ये आपको क्यों redundant किया जा रहा है. Consultation होनी चाहिए. Consultation का ये मतलब नहीं है कि एक दिन आपने बुलाया मीटिंग की और बताया कि जी आप हो गए redundant, thank you so much, and आपकी कल से हमें जरूरत नहीं है. ये क्या होता है? redundancy नहीं होती, ये termination का तरीका होता है जिसमें आपकी कोई गलती होती है.
So when it's the employer's job to provide proper consultancy to the employees if they are redundant, or there are a number of employees who are going to be redundant in coming time. Redundancy, जब आप redundant कर देते हैं उसके बाद consultation नहीं शुरू होती. It has a process. It takes about 6 to 8 months. फिर उसकी कंसिडरेशन देखी जाती है कि इफ एम्प्लॉय इज गुड और एक पोजीशन से रिडंडेंट हो गया तो आप उसको कोई और पोजीशन ऑफर करते हैं विद इन द कंपनी और एसोसिएटेड कंपनीज में. दैट्स अ फर्स्ट स्टेप द ऑर्गेनाइजेशन डू. एंड देन यू सी कि अगर किसी और जगह पे भी प्लेस नहीं हो रहा, देन यू मेक देम रिडंडेंट. और फिर जब हम रिडंडेंट बनते हैं तो फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है फ्रॉम A to Z, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेंसी, then situation कैसे arise हुई, and then why are you selected for this process, how much time the company is going to take to finish your job, कितने टाइम में आपको आपके जो ग्रेजुटी है या प्रोविडेंट फंड है जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको कब मिलेंगे, कितने टाइम तक की आपको सैलरी दी जाएगी. All these considerations should be discussed with those who are in this list जो इनको आपने redundant करना. Then dismissal of employees should be undertaken using a proper redundancy process that compiles with the government statutory dispute process. The employees being dismissed should be made aware of the various elements of redundancy pay they will receive. Any shortcuts in the pre-dismissal process can be potentially costly and could result in a successful claim of an employment tribunal, especially if any of the following apply. Dismissal is for a serious redundancy reason. Selection was based on unsound criteria. There was not a consultancy process. No alternative employment possibilities were considered. So these are the things which are very important. जब हम इस process में जाते हैं तो it's not easy कि हम किसी को, like for example, if I ask myself, any of you those who are working, if you go in the morning and you say, and you come to know that this position is no more required, so if the position is not required mean that you are in the you are not dismissed but you are redundant now for that position. So उस position को redundant करने के लिए अगर हम कंसल्टेंसी का प्रोसेस नहीं यूज करते, सिलेक्शन का क्राइटेरिया अनबाइस्ड नहीं होगा और आप उसको और जगहों पे और उसको जो एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, देन द पर्सन कैन गो इनटू एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे वो ये केस कर सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपको विदाउट नॉलेज डिसमिस किया गया या रिडंडेंट किया गया, जिसका आपको क्या नुकसान हुआ, जिसमें आपका योर फाइनेंशियल नुकसान है, आपका हेल्थ का नुकसान है, वो सब चीज़ों के ऊपर क्लेम कर सकता है. और इंस्टेड ऑफ वो आसान हैवी, वो कंपनी के ऊपर चीज़ हैवी हो जाती है. अगर फाइनेंशियल बर्डन की वजह से आप कर रहे हैं तो वो कम होने की बजाय हैवी हो जाता है, बिकॉज द एम्प्लॉई कैन आस्क फॉर जो भी उसका रीजन है उसके मनी मांग सकता है, उसकी कंपनसेशन मांग सकता है. सो redundancy payments कैसे होती है? If an employee has been laid off or put on short time working, he may be entitled to a statutory redundancy payment under a specific statutory scheme if he terminates his contract by giving notice and satisfies the eligibility criteria. Firstly, the employee must satisfy the eligibility requirement under the general statutory redundancy payment scheme, including the completion of 2 years continuous service. जितने अब आपका service period है उसके बाद. Secondly, the employee must work under a contract according to which his pay is dependent on the provision of work by the employer. For example, workers paid per piece of work done. Whatever the process is, आपका redundancy का process ये होना चाहिए payment का कि like for example हर job की अपनी requirement है. जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि अगर हम project based job की बात करते हैं तो आपकी requirement क्या थी, आपको किस चीज के लिए हायर किया गया था, आपका काम क्या था. अगर आपका काम कोई चीज प्रोड्यूस करके देना था, उसके आगे किसी और ने उसको लेके चलना था, तो जब तक आपने प्रोड्यूस करना है वहां तक का आपने काम पूरा किया है और उसके आगे another person has to take over, तो वहां आपका काम खत्म हुआ. That is why you become redundant. जब आप redundant हो गए हैं तो
क्या आप एलिजिबल हैं फॉर ऑल दोज थिंग्स, और जिस रिडंडेंसी की जो भी पेमेंट्स की जाती हैं, आज यू एलिजिबल? यस, यू विल बी एलिजिबल इफ यू हैव डन ऑल दोज थिंग्स which were expected from you to do before that time. और अगर कंपनी जो है वो आपको टाइम से पहले, बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो अगर आपको टाइम से पहले बताएगा तो आप रिडंडेंट होंगे ना। तो टाइम से पहले क्या आपने वो सारी चीजें कर ली हुई हैं जो रिक्वायर्ड थी, then you are eligible for compensation of redundancy. Work under contract according to which his pay is dependent on the provision of work. कि काम जो आप कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपका जो काम दिया गया वो आपका complete हुआ है या नहीं. Then before we go to digitalize exit management, let's have a discussion over here in our breakout rooms that there are 4 areas on which we are discussing, that is redundancy or uski payments, termination and uski repercussions, and resignation. So my question to you all is that if in a company the employee become redundant, how you are going to provide them consultancy, and how you as an HR person give them a comfort that they should not have a negative impression of the company and leave the company with a happy heart. So this is the discussion we are going to do. We are very less people today, so we don't have to go into breakout rooms. We can discuss in this forum because we just have 6 to 7 people here. So the topic, one of you can take the lead and discuss the redundancy process, and if there is the redundancy issue raised in the company, then how would you manage that? So let's start. It's 7:26. You discuss this for 10 minutes, and then we'll take on the conversation forward. Mansoor sir, you can lead the conversation as well. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन को. राइट, तो हम इसी चैट बॉक्स में बात कर लेते हैं. ओके, ग्रेट. Can we have a verbal conversation as well? इसी रूम में हम बात करेंगे जिसमें हम हैं, और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो शेयर करें, जो पॉलिसीज आप अडॉप्ट करते हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जो होती हुई देखी हैं उसके बारे में बात करें. यहाँ पे पर्टिकुलरली रिडंडेंसी तब आती है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होती हैं, और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेती है, तो फिर जितना भी रिसोर्स अवेलेबल होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन का, नॉर्मली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का, वो फिर सरप्लस हो जाता है. या इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वो रेशियो सेट कर दी जाती है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के पर्सपेक्टिव से कि कितने % जो एम्प्लॉय हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के वो रिडंडेंट होंगे. तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए आप अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, और वो किस तरह की स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की जाती है जब लोगों को रिडंडेंट किया जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव से, किसी भी वजह से. Alright, so redundancy payments में usually जैसे आपने अभी बोला था उसमें restructuring भी countable हो जाती है, M&A merger and acquisitions की वजह से भी हो जाता है, और कुछ jobs जो हैं वो abolish हो रही होती हैं. Basically restructuring का ही part होता है वो, या तो restructuring होती है या digitalization की तरफ जा रहे हैं तो manual working से हम machine की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से भी jobs जो हैं वो technology की वजह से भी बहुत redundant हो रही होती हैं. So in that case what I have seen and experienced is कि या तो उन लोगों को to have a good experience या उनको ह्यूमन
सपोर्ट करने के लिए, नॉट बीइंग अ रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होते हैं, जहां उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल सेट हमें लगता है कि वो ट्रेनेबल भी हो सकते हैं या उनको यूटिलाइज किया जा सकता है इफ दे आर केपेबल इनफ। अब कुछ इश्यूज होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद भी, बहुत हाई उसमें जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हाई हो रहे होते हैं, वो बजट से आउट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम उनको रिटेन नहीं कर पा रहे होते। इन दैट वे इट इज बेटर कि हम परफॉर्मेंस की बेसिस पे या उनकी एलिजिबिलिटी इस तरह की बनाएं कि जो लो परफॉर्मिंग, बहुत ही लो परफॉर्मिंग्स हैं, उनको टारगेट करके उनको रिडंडेंसी पेमेंट्स दी जाएं, या फॉर एग्जांपल गोल्डन हैंडशेक्स या वॉलंटरी स्कीम्स इशू कर दी जाएं, जहां पे हमें लो परफॉर्मर्स जो हैं वो छोड़ के चले जाएं और सिर्फ हाई परफॉर्मर्स हमारे पास रह जाएं, सो दैट प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे और हमारा जो कॉस्ट कटिंग है उस पर भी इम्पैक्ट ना आए। उसकी एलिजिबिलिटी पे फिर हम फोकस करना होता है कि जो टारगेट हम कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, उनका ही हिसाब से एलिजिबिलिटी बनाई जाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन और वो जो टारगेटेड ऑडियंस है वो दोनों के बेनिफिट्स में, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम उनको ट्रेन करके उनके स्किल सेट को हम कहीं और यूटिलाइज कर लें, जो नई जॉब्स हो रही हैं या जो नए एरियाज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उनको पेमेंट्स की तरफ लेके जाके और वॉलंटरी सेपरेशन की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो रिसेंटली जब पीटीसीएल को एक्वायर किया था इत्तसलात ने, तो उन्होंने भी ऑफर्स की थी गोल्डन शेक हैंड की, और वो मल्टीपल जो सैलरीज थी, ऑलमोस्ट 50-60 सैलरीज उन्होंने क्रॉस की, उनको ऑफर की थी। जिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया वो तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया तो वो फिर अल्टीमेटली फिर उनके लिए उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर ली ना। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर ली कि चलें ठीक है आप जॉब करते हैं करें। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लोगों को हायर किया। अब एक ही स्केल का आदमी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है और उसकी सैलरी पैकेज बिल्कुल लो है जो प्रीवियसली चल रहा था पीटीसीएल का, लेकिन जो किसी और लोगों को हायर किया प्राइवेट सेक्टर से तो उनको हायर सैलरी पे हायर किया, जिसकी वजह से जिन लोगों ने छोड़ा नहीं था तो वो अल्टीमेटली वो डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया ना। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करके हर 2 साल या 4 साल के बाद वॉलंटरी स्कीम्स निकाली हैं, सो दैट उनका जो एम्प्लॉय रेशियो है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है ना। और मुझे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने का इत्तेफाक हुआ जिनकी एक्विजिशन हुई है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा पैकेज ऑफर किया, बेंचमार्किंग उन्होंने सेट कर दी, जितने ईयर्स रह चुके थे नॉर्मली उसके ऊपर देखा उतने ईयर्स की सैलरी उन्होंने एम्प्लॉयज को देना शुरू कर दी ना, रिमेनिंग नॉर्मली डिफरेंट स्ट्रेटजीज उन्होंने डिजाइन की। I have been a part of a couple of voluntary separation scheme designing team as well, तो आइडिया है उसमें क्या क्या होता है, इवन बेंचमार्किंग भी की हुई है। सो पीआईए में और डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अभी तक गोल्डन हैंडशेक चलता है, और एयर एविएशन उसमें भी बहुत ज्यादा चलता है। पीआईए की बहुत दफा आ चुकी है, रीसेंट भी आई थी, और अब रीसेंट पीटीसीएल बहुत ज्यादा उसमें फ्रिक्वेंसी में दे रहा होता है बिकॉज अभी भी उनके पास एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं। रेहान का ने हैंड रेज किया तो मैं उनसे चाहूंगा वो क्या बात करना चाह रहे हैं प्लीज। अस्सलाम एवरीबॉडी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, यू आर ऑडिबल टू ऑल ऑफ अस। अच्छा सर, रिडंडेंसी सर वर्क प्लेस पे इसलिए हो जाती है कि सर इसकी बेशुमार रीजन है सर, लिमिटेड नॉट टू द बिजनेस, लेकिन जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आ गया उसकी वजह से बेशुमार फैक्टर्स होते हैं कि सर बिजनेस नहीं चल पाते। उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि सर टर्मिनेशन ऑफ जॉब टाइटल, जॉब टाइटल्स भी सर जो एक्सपायर हो जाते हैं, आपको शायद उस तरह के लोग नहीं चाहिए होते, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। और सर उसके बाद ये है कि आपकी काफ़ी लोग आपको रिडंडेंट इससे भी हो जाते हैं कि जब आप अपने रीलोकेशन ऑफ द बिजनेस रहते हैं, तो मतलब सब एक सिटी से दूसरी सिटी चले गए या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन चले गए। सर हमारे एक्सपीरियंस में हमने नंबर ऑफ टाइम, मतलब इन 6 years वी हैव रीलोकेटेड आवरसेल्व्स 2 times। इन 2 times में सर हम लोगों ने ये देखा कि जो लोग हमें हमारे साथ काम करते रहे वो डिस्टेंस की वजह से या टाइम ज़्यादा लगने की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से सर काफ़ी लोगों ने हमें, मतलब if I give you a number, it's not more than 2%, but it is quite a big number, तो उन्होंने हमें छोड़ा रीलोकेशन ऑफ दी इसकी वजह से।
रिडेंडेंसी सर इन द वर्कप्लेस एम्प्लॉयज में इस तरह भी आती है और सब चीज़ों में भी आती है कि आप मर्जर्स की वजह से भी तो आती है। इन सर ये फैक्टर्स भी हैं कि जैसे रिलोकेशन ऑफ द बिजनेस, टर्मिनेशन ऑफ द जॉब टाइटल एंड इकोनॉमिक रिसेशन सर। दैट्स फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऐसा भी होता है जैसा आपने बताया था, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो उसकी वजह से भी होता है, फिर वहाँ पे भी पैकेज डिज़ाइन किए जाते हैं। और फिर इसके अलावा एक वो जो मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है हेज, जिसके सर्वेज होते हैं, जो रिस्ट्रक्चरिंग जब आप करते हैं, रीडिज़ाइनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो तब भी फिर आप वो देखते हैं कि जॉब एवेल्युएशन और जॉब एनालिसिस करते हैं, तब भी कई पोजीशन आपको अल्टीमेटली ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है, सरप्लस नज़र आना शुरू हो जाती है, वर्कलोड के पर्सपेक्टिव से या रिसोर्स की एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो तब भी आप डिसाइड करते हैं, तो तब भी फिर आपने कोई ना कोई पैकेज डिज़ाइन करना होता है उन लोगों के लिए ताकि वो लोग लीव कर जाएं ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह से भी है। तो ये बेसिकली रिडेंडेंसी के ऊपर जितनी अच्छी पॉलिसी हम लोग बनाते हैं ना, उतना ही अच्छा हमारा एम्प्लॉय ब्रांडिंग भी होती है। और जहाँ पे रिटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो लोगों को किस तरह प्लेस करें। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतना सपोर्टिव होती हैं कि जो लोग रिडेंडेंट हो रहे होते हैं उनको उनकी प्लेसमेंट के ऊपर भी काम कर रही होती हैं। वो रिक्रूटर से जो फ्रीलांसर रिक्रूटर्स होते हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनके पास प्लेसमेंट करवाते हैं उनके ज़रिए से लोगों को। तो इस तरह की एग्जाम्पल भी देखी गई है। मैं मोबाइल लिंक या जैज़ की बात करना चाहूँगा, तो वहाँ पे ऐसा ही देखा गया है कि उन्होंने कांटेक्ट किया मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में काम करती हैं, उनके 2-2 3 इंटरव्यूज़ करवाए उन्होंने। इस तरह से भी फैसिलिटेट किया था लोगों को। तो ये सारे के सारे बेसिकली अब एग्जिट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसका एक पार्ट है। तो उस पार्ट में एग्जिट मैनेजमेंट जितना अच्छे तरीके से किया जा रहा होगा, उतनी ही एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अच्छी होगी, उतनी जो आपके जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो किसी भी वे में छोड़ के जा रहे हैं, वो फिर आपके ब्रांड एम्बेसडर उतने ही बेहतर बनेंगे। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे बात? जैसे रहमान रसूल हैं, राशिद यूसुफ, मिसबा, फातिमा अजहर। Okay, so we have a discussion. तो हमने अगर if somebody is who would what would the process of consultancy? Who's going to discuss that? If the employees are redundant, what would be the process of consultancy? Consultant से आप उसमें क्या देंगे? Consultancy क्या देंगे एक employee को? So we can provide them trainings as well. कोई development, कोई skill set, vocational training भी दी जा सकती है। इसके अलावा उनको फर्दर उनके पास ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि हमारे पास आपकी जॉब अगर रिडंडेंट हो रही है तो आपके अलावा और कौन सी नई जॉब्स हैं जिसमें आप यूटिलाइज हो सकते हैं, या सिमिलर जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं विद इन द सेम सेक्टर और विद इन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं। तो कंसल्टेंसी का तो कोई there is no limit to it. जितना आप प्रोवाइड कर सकें, जितना आप you can go ahead out of the box for your employees to support them for their betterment या उनके future के लिए आप कर सकें, so it's better. But I've seen this experiencing के लोग इतना करते हैं as an organization for their ex-employees. ठीक है, so let's have a role play. If I'm a redundant person in your company, so how would you do the how would you start the consultancy process with me? So I'm redundant, and how would you start the process? So I'll check with your job responsibilities, your job description first. I'll have a research first before giving you consultancy कि आपकी skill set क्या है and आपकी skill set या आपकी similar job जो है वो और कहाँ पे है और कहाँ पे vacant है जहाँ पे hiring हो रही है already. So I'll have that data. फिर उसके बाद आपकी एज क्या है, आपकी एज के हिसाब से आप क्या इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में मौजूद हैं भी या नहीं, आपकी रिटायरमेंट कितने करीब है, विच टाइप ऑफ जॉब्स यू कैन डू if you are able to do it, तो वो within the organizations के options हैं आपके पास. I'll have that data as well. उसके अलावा आपके बच्चों के लिए अगर if you are old enough, if an employee is old enough, तो अगर कोई ऐसी job है जो उसके बच्चे कर सकते हैं within the same organization, within my organization, I'll
give that option as well. I'll get that data as well. So I should have the family data if it is possible. जो target employee है, so on and so forth. उनकी qualification क्या है, qualification के लिए क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास again अगर उनके पास पैसे उनको जैसे redundancy payments दी जा रही हैं, so redundancy payments में हम कहाँ invest कर सकते हैं, where are the markets, investment plans different आ जाएं या insurance plans उनको बता दिए जाएं, so that they have a backup support, financial support, उनको financial इतना ज़्यादा problem ना हो after their leaving that job. ठीक है, अच्छा ये तो आपने जो I बताया have a question benefits here. I have a question here. If the employee is serving for the last 10 years और 10 years में serve किया organization को, then we get to know कि नहीं अभी position काफी ज़्यादा हो गई है, now we just want to abolish this position. इस case में employee को हम कौन-कौन से benefits देंगे? I just want to talk about the monetary benefits here. उसको किस तरह compensate करेंगे हम सारे apart from gratuity and provident fund? इसके अलावा क्या होगा इसके लिए और? ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, जैसे अभी हम कंसल्टेंसी की बात कर रहे हो, मायमा ने भी जो डिस्कस किया वो सिर्फ बेनिफिट्स की हैं। कंसल्टेंसी क्या है? कंसल्टेंसी ऐसे benefits अलावा monetary terms yes. तो जैसे like for example, if I talk to Mansoor Saab, if you are available, let's have a talk to you. So if he is redundant, what I'm going to do is I'm going to call the person. And how to start the conversation is very important. जैसे आपने उनको कैसे बताना है कि जी you are the position is no more required. So how to start that consultancy is important. आप उसमें provide क्या करें, that is a later stage. Over here your communication skills are tested, that how you convey that thing that the person is redundant. So Mansoor Saab, if I am redundant, so what questions and how do you start that conversation with me? देखिए मैं आपसे आज मिलने आया हूँ और बात करने आया हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों हमने सर्वे किया था, रिस्ट्रक्चरिंग की थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये लग भी रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो उस तरह हो नहीं रही जिस तरह हमने प्लान किया हुआ था और सोचा हुआ था। कंपटीशन है और डॉलर की रुपीज़ की डिवैल्यूएशन भी चल रही है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग हायर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ रही है कि बहुत से लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि बहुत से पोजीशन हम वो कर रहे हैं, रिटेंडेड कर रहे हैं ना। उसमें आपके डिपार्टमेंट में से कुछ जो लोग हैं उनका हेडकाउंट को हमने कम किया है और डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि हम करें, और आपसे भी मैं डिस्कस करूँगा। आप थैंक यू मंसूर साहब। जैसे मंसूर साहब ने स्टार्ट किया इसी तरह लाइक व्हाट वी हैव टू डू है, सबसे पहले आप बताएंगे मार्केट कहाँ है, आपकी फाइनेंशियल स्टेज कहाँ है, अगर फाइनेंशियल की वजह से आप खत्म कर रहे हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू टेल द पर्सन, उसको ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि जी अभी इतना हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं, दिस इज द रिक्वायरमेंट। सो यू स्टार्ट द कंसल्टेंसी लास्ट स्टेज पे नहीं आप करेंगे, ये आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और रिडंडेंट करने से 3 महीने पहले से आप ये बातें शुरू करेंगे। ये जो मायमा से मेरी डिस्कशन हुई है ये तो लास्ट है, जब आप उसे बता देंगे कि आप रिडंडेंट हो गए। आप ये प्रोसेस कहाँ से शुरू करते हैं, जब आप ये अवेयरनेस या फिर आप ये इंस्टिल करना शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसकी वजह से रिडंडेंसीज हो सकती हैं, जॉब कट्स हो सकते हैं। सो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, और जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि यस यू आर द वन हु इज रिडंडेंट, देन यू टॉक अबाउट कि हम आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस थिंग, जो भी चीजें आपने अभी डिस्कस की। बाकी आपकी बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल सही थी, इट शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। दूसरा फातिमा का क्वेश्चन था कि अगर 10 ईयर्स से व्हेन एम्प्लॉय इज देयर और आपका 10 ईयर्स के बाद आप रिडंडेंट हो गए, it depends on which position are you. If you are in a senior position, the reason may be your salary. So if the salary is the reason, then you give them आप उसको रीजन, फातिमा आपका क्वेश्चन रीजन था कि why you are redundant, और आपका क्वेश्चन ये है कि आपने क्या redundant कर रहे एम्प्लॉय को, तो what benefits we offer to the employees only in term of monetary benefits क्या देंगे? जैसे for example in case of termination, अगर हम टर्मिनेट करते हैं एम्प्लॉय को तो वी गिव देम 1 month सैलरी इन एडवांस। अगर हम इस केस में करें तो हम क्या दे रहे हैं उसको? इसमें इसका एग्जांपल है जैसे अगर अर्ली रिटायरमेंट है तो आपकी रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी व्हिच यू हैव साइन,
तो अगर 60 years है तो आपको 60 years तक की सैलरी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपकी ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड के अलावा होती है, उसको डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। इसी तरह अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है रिमेनिंग, तो आपको वो 3 years की सैलरी देनी पड़ती है, बिकॉज आप उसको रिडंडेंट कर रहे हैं ना। तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ 3 years का, तो आप 2 साल बाद उसको खत्म कर रहे हैं, तो द कंपनी इज लायबल टू पे फॉर 1 year। ये आपकी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है आपने कैसे की हुई। लाइक इसके एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही कर लें, या आप आर्म फोर्सेस की देख लें। आर्म फोर्सेस में वेरी क्लियर, व्हेन 60 years की सर्विस तक उन्हें सैलरी मिलती है, डिपेंड कि वो किस टाइम पे रिटायर हो। जब वो रिटायर होते हैं उस डेट से लेके उनकी रिटायरमेंट की एज तक के उन्हें पैसे उस वक्त प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दैट इज अगेन जो रिडंडेंट ही होते हैं ना, अगर वो खत्म हो गया, आगे उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही, खत्म हो गई, उनके रिडंडेंट हो गए वहां पे, तो उनको वो अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टिल 60 years ऑफ एज तक, जो सैलरी उसकी है उस वक्त उसके हिसाब से। तो दिस इज हाउ यू बेनिफिट द एम्प्लॉय। रेहान का कमेंट है कि स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अर्ली, यस वेरी गुड, एंड कीप इट ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल, चूज द राइट चैनल्स, be ready to join the broader conversation, be available and support is very good, because जो transparency कहाँ से शुरू होगी, when if the specific area is identified, like for example हम HR में बैठे हैं, हमने HR department बहुत बड़ा हो गया, इसको हमने छोटा करना है। The meeting should start with HR department, not saying कि ये भी खत्म ये भी खत्म, you will start the conversation that this is happening, ये expensive है, या यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इस जगह पे हमारी रिक्वायरमेंट लेस हो गई है। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज एग्जिट मैनेजमेंट। इम्प्रूव क्या होती है, डिजिटलाइज क्या होती है, जैसे हम ऑटोमेटेड है सारा कुछ, और वी से दैट एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, एंड हमारी एग्जिट मैनेजमेंट सारी जो है वो ऑनलाइन होती है, एंड वी डोंट नीड एनीथिंग इन राइटिंग। तो प्रोसेस क्या है? Improve employee separation process through structured and configurable automation using best digital toolkits to all stakeholders, to employer to empower your outgoing employees, gig workers as your brand ambassadors. So हमने जो भेज रहे हैं, अपनी एग्जिट करा रहे हैं अपनी कंपनी से, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, whether they are working in our company or not, but they are part of the company and they are brand ambassador. They are representing your company, whether they are in your company or not. E-separation provides a single platform for a comprehensive, error-free disengagement, smooth offboarding and transition. Thus, provide a value add for your missing HR automation and close the gap. So, online जब हो जाता है तो it becomes very easy. Ensure statutory compliance in audit results, provide transparency in the offboarding process, enable smooth transition and disable perceptions. इसमें स्टार्ट करते हैं अभी हम कि कहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, स्टेप्स क्या हैं इसके। Step by step guide to employee offboarding. Here is a quick overview of the different steps and what to do at each point to make the process as seamless as possible. The resignation letter should be accepted and the information should be shared with respective managers as well as the team member to help them prepare ahead. The documentation procedure, including payroll, non-disclosure agreement, and other documents to get the leaving employees' signatures should be prepared. जब एक employee है उसने resign कर दिया, रेजिग्नेशन लेटर जब आपको मिल गया है और वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस से पहले का तो क्राइटेरिया ये है ना कि आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, और जो हमने कहा था कि हीट ऑफ द मोमेंट पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, वर्बल जो भी है, तो उसके ऊपर तो पहले एचआर ने अपना काम किया, उसको रिटेन करने की कोशिश की, और दैट प्रोसेस हैज बीन डन, वो खत्म हो गया, तो रेजिग्नेशन आ गया, तो और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। जब एक्सेप्टेड है, then information should be shared with respective manager. जो लोग उस एम्प्लॉय के साथ एंगेज है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जिट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं, पेरोल की रिक्वायरमेंट है, कोई आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन हुए हुए हैं, कोई आपने कोई और अग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई आपने ऐसा बॉन्ड साइन हुआ है, वो सारी चीजें
ताकि उनको प्रोसेस में लाया जाए और उनको देखा जाए कि कहाँ और किधर अप्लाई होते हैं ये। फिर a clear-cut responsibility transfer should take place so that a different employee can take over the pending work. तो ये clear-cut responsibility transfer तभी हो सकती है when we are well informed and when we have a proper notice period. तो you can assign another person to take over the things और उसमें proper pending work को next person के ऊपर भेजा जा सकता है. Prepare a set of questions and keep them ready for the exit interview. This is very important. I work with different organizations and exit interview का culture बहुत कम है, और अगर है भी तो they don't ask set question, they are simple talk and then जब आप इसको automated कर देते हैं तो आपके जो exit interview के questions हैं that should be in the form, e-form. I was working with an international organization, American based थी, तो उनका जब मेरा exit interview हुआ, that was I was expecting कि एक interview होगा, somebody is going to come from HR and going to have an interview with me, but when I open उनका एक portal होता है, आपने open करना है, meeting portal था, I thought कि meeting with somebody is going to come and I'm going to have a chat with that person. But when the portal opened, there was no one. There was just a virtual talk, and then there were questionnaires, and the questionnaires are very set and very clear, जिसमें आपने अपने thought process को represent करना, और वो क्या बन गया, उनका database ready हो गया for their company के, and उसमें आप जब लिख रहे हैं, you are not talking to someone, तो आप जैसे हम लोगों को आदत है कि हम बहुत सारी चीजें बताते नहीं हैं, हम कहते हैं हम तो जा रहे हैं, छोड़ो अब जो हो गया बता के क्या जाना. But when you are writing, then nobody is looking at you, so you can write, you can give the right feedback. So that is, again, exit interview is very important. The predefined questions can be used repeatedly once they are uploaded to the workflow automation software. File employee contact details, their job role and other info so that it is easier to get in touch with them when required in the future. HR में आपका data base maintain करना बहुत जरूरी है. जो employee file है, that is very important. Employee file यही नहीं कि बस जब अभी आप काम कर रहे हैं और जब exit हो गया था file को आप साइड पे कर दें. हाँ, आपके पास archiving होती है, आप उसमें रखते हैं, but जब automated हो जाता है तो once you worked in an organization, तो आपका database उस organization में रहता है. And you keep tag whenever there is such position arises. Maybe वो बंदा resign करके गया और next after a year or so आपको उसकी requirement दोबारा हुई है, तो आपके पास वो database में है, and you can ask that person that whether you are ready to join back again, or if you have any if you want to join back or something like, कुछ ऐसे questions आप उनसे आप in touch रह सकते हैं, क्योंकि HR का सबसे बड़ी जरूरत जो है उसकी वो ये कि you have to be in touch with human resource, different kind of human resource, चाहे वो छोड़ के भी चले गए. But of course to proper resignation देके जाएगा तो companies do want कि वो दोबारा भी join करें. और responsibility transfer is again very important. This is the process जिसको automated करके जब हम इसको discuss करते हैं, like सबसे पहले phase 1 क्या है? Preparing for employee exit. इसमें क्या आ गया? Resignation आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई. डिपार्चर क्या है? एक्सेप्टेंस आ गई. डिपार्चर क्या है? फेज 2 के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स एंड द एक्चुअल डेट ऑफ डिपार्चर. फर्स्ट वाले में हम प्रिपेयर कर रहे हैं जी, रेजिग्नेशन आ गया है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट, पहले जो हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट क्या है और उसका एग्जिट इंटरव्यू किस दिन होना है, उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कोई बॉन्ड तो नहीं साइन हुआ, वो कुछ तरह की चीजें आप प्रिपेयर करनी. डिपार्चर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कि उसके पास जो जो चीजें आपने उनसे लेनी है या उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है, एंड देन द एक्चुअल डेट ऑफ डिपार्चर, कि किस दिन जो उसका लास्ट वर्किंग डे है वो क्या है. लास्ट वर्किंग डे आ गया, उसकी सब चीजें आपने ले ली, एंड द एम्प्लॉय एग्जिट, बट द एम्प्लॉय इज अगेन ऑन योर डेटाबेस अनलेस एंड अनटिल आप उसको क्लियर नहीं करते from the company. उस पर कितना टाइम लगता है? डिपेंड ऑन डिफरेंट कंपनीज. कोई 1 month लेते हैं, कोई 40 days लेते हैं, कोई 20 days लेते हैं, उसमें उसको ऑफ बोर्डिंग कंप्लीट करते हैं. एक्सटेंड बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उसके बाद जो जो उसकी चीजें आपने प्रोवाइड करनी है वो कितने दिन में करते हैं. हर कंपनी का अपना प्रोसेस है, उसमें उससे कंप्लीट करते हैं. उसका प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, एक्सपीरियंस लेटर और जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप उन्हें उसको पोस्ट डिपार्चर उसमें प्रोवाइड करते हैं. हु इन्वॉल्व इन दिस फेज?
सबसे पहले एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय रिजाइन करेगा, मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेगा, एचआर को इन्फॉर्म करेगा, और एचआर किसको इन्फॉर्म करेगा, को वर्कर्स और पीयर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द रेजिग्नेशन. एम्प्लॉय विल इनिशिएट द रिक्वेस्ट. उसने अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी, ऑटोमेटेड आपका प्रोसेस है, उसमें उसने अपनी रेजिग्नेशन पुट कर दिया और इनिशिएट कर दिया. क्रिएट सेल्फ एवेल्युएशन. आप अपनी खुद सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं, ये रीजंस हैं, इसकी वजह से मैंने ये काम किया, ये किया, एंड नाउ आई एम leaving the organization. Fill the separation form that I am leaving the organization. These are the ये मेरे पास responsibilities I'm exiting from these responsibilities. Then submit the request. Manager to provide feedback. Manager feedback provide So approval के बाद to begin the termination process and then submit the request. Now employee ने जब उसके behalf पे क्या है? What when you get the notice, receive and give notice, complete paperwork. आप ये जो स्लाइड है इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं, वैसे तो शेयर हो जाएगी आपसे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एग्जिस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब हमने रेड में एम्प्लॉय से बात करें तो एम्प्लॉय को क्या कुछ करना है, उसने नोटिस देना, अपना कंप्लीट पेपर वर्क करना है, डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सारी पूरी करनी है, एंड कम्युनिकेट द डिपार्चर, और अपने आखिरी लास्ट डेट ऑफ लास्ट वर्किंग डे इन्फॉर्म करना है. तो ये सारी वो चीजें हैं जो एम्प्लॉय के एंड पे हो रही हैं. और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो द डे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ बोर्डिंग, जब रेजिग्नेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एंड डेट ऑफ डिपार्चर आ गया. डेट ऑफ डिपार्चर पे क्या होना है? रिट्रीव एवरीथिंग. You have to take all the material which is with that person. आपकी लैपटॉप्स हैं, या आपने कोई फोन्स दिए हुए हैं, या आपने कोई और गैजेट्स हैं उनके पास, साइनिंग अथॉरिटी है, documents हैं, so you have to retrieve all that. Conduct an exit interview. फिर हमने पहले प्रोसेस देखा था एग्जिट इंटरव्यू का, कि उसके लिए हमारे पास एक एग्जिट इंटरव्यू या तो ऑनलाइन होना चाहिए या फिर फेस टू फेस एग्जिट इंटरव्यू करना है. एंड थ्रू अ सेलिब्रेशन. This is very, very important if you want your organization to have a good name in the market. So when your employee is leaving, must celebrate that employee, that whatever work he or she has done in the company, उसको जरूर celebrate करें, उसको जरूर appreciate करें. जो छोटी सी जो जिसे आप कहते हैं farewell speech होती है, that is very important for the employee who is leaving. But it is more important for the company from where that person is leaving, because that will give an impression of the company to the market. अगर आप उसको एक अच्छा goodbye note देंगे, तो he or she is going to speak the same in the market about the company from where they're going. After employee leaves, delete employee from system. Employee को अपने system से delete करना है, उसका एक process है, payroll में जाएगा, बिकॉज उसकी 1 month की सैलरी होगी, वो आपकी पेरोल से निकलेगी, फिर आपका प्रोविडेंट फंड उसका जाएगा, फिर और जो बेनिफिट्स हैं अगर उसको दिए हुए प्रोवाइड किए वो देने आपने सब. जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू डिलीट दैट एम्प्लॉय फ्रॉम द सिस्टम, क्लीन अप देयर स्पेस, एंड देन दैट स्पेस विल बी एम्प्टी. सो द रेड पार्ट इज टुवर्ड्स एम्प्लॉय, and the orange part is at the time of departure towards the administration, and the blue part is for HR.
Again, same process है. Resignation is captured online. Final exit interviews conducted. Clearance formalities are performed. Full and final payment is calculated and paid, and employees are exited from the system. Now, एक तरह इस slide के ऊपर we'll have a discussion. So HR में क्या, HR ने क्या करना है और employee ने क्या करना है. Employee जो है वो HR को बता रहा है कि I have resigned. HR ने employee के लिए क्या कुछ करना है. डिपार्टमेंटल क्लियरेंस करनी है, उसकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस करनी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस करानी है, एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस करनी है. एचआर के बाकी क्या काम है. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कि आपने वेरीफाई करना है जो जो चीजें हैं, अगर डिपार्टमेंट जिस सब चीजों कर रहा है उसको वेरीफाई करें, वैलिडेट करें कि यस इट इज डन. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहां से जाएगी. एचआर से जाएगी. And then sign off and remove जो भी उसकी चीजें हैं database से आप उसको remove कर देंगे. So this process is very important. Let's have a discussion on this because now we have time for discussion. So let's discuss today's topic. क्योंकि अभी हमने इसको जो process है वो आपको clear हो गया. I'll just give you another quick recap on the process. I like this slide a lot. क्योंकि इसमें आपको सॉरी नॉट दिस इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. और इसके साथ कंटिन्यू करती है दूसरी स्लाइड कि प्रेपरेशन जो फेज 1 है रेड है वो एम्प्लॉय के लिए. एम्प्लॉय क्या करता है. एम्प्लॉय ने सब कुछ प्रिपेयर करना है, उसने रेजिग्नेशन देना है, उसने अपनी क्लियरेंस करानी है, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट जो किया हुआ है उसको कंप्लीट करना है और हैंडिंग टेकिंग करनी है. जिस दिन डिपार्चर हो रहा है उस दिन क्या होना है. एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या है. डिपार्चर में उसका एग्जिट इंटरव्यू है, उसकी एग्जिट इंटरव्यू है, फिर उसके जो भी वो रिट्रीव करना है आपने सारा डेटा उससे, एंड साइनिंग अथॉरिटी खत्म करनी है, एंड देन द पर्सन कैन लीव. दैट इज द लास्ट वर्किंग डे. एंड आफ्टर the employee left the organization, then ब्लू जो है वो एचआर का काम है कि उसकी फाइनल सेटलमेंट करे, उसको ऑफ बोर्ड करे फ्रॉम द डेटाबेस. उसने उसकी सैलरी है, उसका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेट्युटी है, या वट एवर बेनिफिट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, वो उसको दे के क्लियर करके देन यू कैन एग्जिट दैट पर्सन फ्रॉम दैट डेटाबेस एंड दैट स्पेस बिकम एम्प्टी. जो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें डिस्कस की, यू मस्ट सेलिब्रेट द एग्जिट through with co-workers and peers. So let's have a discussion on the exit management process. So anyone who have any questions regarding this process or any observations, let's discuss that. I have a question. मैं एक recent example share करना चाहता हूँ. जैसे मैंने आगे बताया था कि last week we have terminated an employee. अब उसके ऊपर वैसे तो breach of the contract के ऊपर within 24 hours आप 1 day notice के ऊपर terminate करते हैं. बट उसको जो हमारे सीईओ उन्होंने कहा था कि नहीं आप 1 महीने का उसमें नोटिस पीरियड मेंशन कर दो टर्मिनेशन में, ताकि वो नेक्स्ट जॉब वगैरह ढूंढे और देन ही में दी. अब बट वो आफ्टर दैट टर्मिनेशन विद इन 2 days उसने फिर हमें डिस्पाइट ऑफ द नोटिस वो चला गया था. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम टर्मिनेशन के ऊपर किसी को 1 माह का नोटिस दे रहे हैं तो तब भी वो ऑब्लाइज होता है कि वो 1 महीना पूरा हमें सर्व करेगा. इन बिटवीन अगर वो छोड़ के जाता है तो वो उसी तरह जो डिडक्शन और चीज़ें होती हैं वो होती हैं या नहीं. इस पे नहीं होती टर्मिनेशन के नोटिस पीरियड पे जो एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, डिस्पाइट के रेजिग्नेशन में तो एम्प्लॉय दे रहा होता है रिजाइन, तो इसलिए ही इज ऑब्लाइज्ड टू सर्व द 30 डेज. टर्मिनेशन में आपका नोटिस पीरियड नहीं होता क्योंकि आप उसे टर्मिनेट कर रहे हैं. इफ यू नीड इसमें 7 days का टर्म, अगर आपका कोई टर्मिनेशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे या ऐसी जाहिर है आपने उसको एग्जिट तो करना है अपनी कंपनी से, तो यू कैन आस्क देम फॉर मिनिमम 7 days के लिए आके आप उसको एग्जिट कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेयर द पर्सन इज वर्किंग एंड द काइंड ऑफ वर्क द पर्सन इज डूइंग. उस पे मैटर करता है. अगर काम ऐसा है जिसमें वो दैट पर्सन has the hold on the main chunk of the work, तो of course फिर आपको उसको बुलाना पड़ता है और आप उससे रिट्रीव करना है, डाटा रिट्रीव करना है. स्पेशली जो डेटाबेस पे काम करते हैं या फिर जो कंप्यूटर के इस पे, क्योंकि जिनके पास डाटा होता है कंपनी का, ऑफ कोर्स आप उन्हें 1 दिन के नोटिस पे कहेंगे तो आपका डाटा ले जाएंगे. तो यू हैव टू कॉल देम. आप उनका नोटिस पीरियड रिड्यूस कर देते हैं ताकि उस रिड्यूस नोटिस पीरियड के ऊपर दे कैन कंप्लीट दैट.
और उस रिड्यूस नोटिस पीरियड में अगर वो उस चीज को पूरा नहीं करते, लाइक वो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 7 डे करते हैं, अगर वो दूसरे या तीसरे दिन ही चला जाता है, अगले 3-4 दिन सर्व नहीं करता, तो इस केस में कंपनी के उसके डिडक्शन और वो सारा मैटर सेम उस तरह पे फॉलो करेगी या नहीं, या बिल्कुल डिडक्शन करेगी, क्योंकि बिल्कुल करेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे टर्मिनेट किया हुआ है। तो इट इज नॉट इतनी कोई हेल्दी चीज तो है नहीं कि वो आएगा आपके पास। वो डेफिनेटली 1 दिन या 2 दिन के लिए ही आएगा, 7 डेज के लिए वो नहीं आएगा इफ इट इज ऑन कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और अगर आपका टर्मिनेशन उस लेवल का है जिसमें यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू दैट पर्सन, तो आपने सिर्फ उससे अपनी बेसिक चीजें ही रिट्रीव करनी है और डिडक्शंस आप करेंगे, ऑल डिडक्शन वुड बी डन। हाँ, अगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर हो रहा है then there can be any flexibility, और फिर उस शख्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, the person can come later as well. I have a question here. अगर हम एम्प्लॉय को, if we are terminating an employee, उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, और in this case if there any possibility अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ गुडविल जेस्चर उसका प्रोविडेंट फंड या उसके अदर बेनिफिट्स को रिलीज करती है, तो would it be possible? प्रोविडेंट फंड तो आप रोक नहीं सकते, चाहे आप टर्मिनेट कर रहे हो चाहे आप रेजिग्नेशन कर रहे हो। प्रोविडेंट फंड तो यू हैव टू पे टू द एम्प्लॉय। हाँ, उसमें कंपनी अपना कितना डालती है, मे बी हर कंपनी का डिफरेंट होता है, कोई 100% डालते हैं, 50% डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड जितना वो उस पे होता है। तो प्रोविडेंट फंड तो कोई भी कंपनी नहीं रोक सकती, यू हैव टू प्रोवाइड द प्रोविडेंट फंड टू द एम्प्लॉय। यू कैन उसमें नहीं है, लेकिन हाँ बाकी बेनिफिट्स कंपनी कैन स्टॉप एज अ गुडविल जेस्चर, वो दे भी सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कोड, क्योंकि अगर आप ऐसा प्रेसिडेंट एक दफा सेट करेंगे तो पीपल विल नो कि हम कुछ भी कर लें, वी विल गेट एवरीथिंग। तो मोस्टली कंपनीज ऐसा प्रेसिडेंट सेट करते नहीं है कि अगर इतनी ग्रॉस मिसकंडक्ट हो और वो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर दें। राइट, थैंक यू। Any other question? Yes, I have one question regarding exit interviews. जी। तो मिस इस तरह हम लोग जब इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो समटाइम स्टाफ फीडबैक दे रहे होते हैं ऑन द फॉर्म एज वेल अबाउट पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, और समटाइम वो क्या करते हैं, वो वर्बल हमसे कुछ भी डिस्कस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर अब्यूसिव है, मे बी वर्क एनवायरनमेंट इशू, और मे बी सम हरासमेंट टाइप ऑफ इशू, बट वो फॉर्म पे मेंशन नहीं करते, दे यूजुअली से इन वर्बल। तो ऐसे केसेस को फिर हम एज अ एचआर प्रोफेशनल कैसे डील करें जब वो रिटर्न में कुछ नहीं करे बट वो बता भी रहे हैं हमें ऑन द लास्ट वर्किंग डे इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज? जो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं, आपके पास एक अपना, जिससे मैंने आपको अभी डिस्कस हम कर रहे थे ना कि एग्जिट मैनेजमेंट की जो एग्जिट इंटरव्यू है उसका क्वेश्चनर होना चाहिए आपके पास। when you are having a meeting with a person who is going, उसे आपने डिस्कस कर लिया, उसने एरियाज भी बता दिए, तो आप उसमें आपके पास अगर the person is not writing, you can write yourself. If the person don't want to sign it, at least you should have the information with you. तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। एंड जो प्रेफर तरीका तो यही है कि द पर्सन शुड राइट द कमेंट्स हिमसेल्फ और वो उसको साइन करके दे। अगर नहीं करते तो जैसे आप इसीलिए जब हम ऑटोमेटेड कर देते हैं तो एग्जिट इंटरव्यू में पीपल आर मोर कंफर्टेबल टू प्रोवाइड देयर फीडबैक। Yes, noted. Thank you. I want to add something here. In my scenario जो मैंने देखा है, it is always the case जब हम उनको written form में देते हैं कोई communication करने के लिए, they always write everything, whatever is in their head, वो सब कुछ लिखते हैं जो भी इनको issues थे, concerns थे, whatsoever. But when it comes to verbal communication, वो इतना ज़्यादा frequently और इतना easily communicate नहीं करते हैं employees के साथ, क्योंकि सारे employers होते हैं वहाँ पे। लेकिन जो अगर वो कर भी रहे हैं तो it should be two way ना, it should be two way. आप अपने पास note करके जब आप report generate करते हैं, you can mix and match the whole scenarios with the report. बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज रिपोर्ट जनरेशन इज द जॉब ऑफ द एचआर एम्प्लॉई। तो देखो जब एम्प्लॉय इज लीविंग, सम एम्प्लॉयज टेल एवरीथिंग, और वो ड्यूरिंग द टेन्योर वो कभी भी वो बात नहीं करेंगे, बट जाते हुए बोल के जाएंगे। तो अगर वो बोल भी रहे हैं आपको, तो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन डेवलप योर ओन डेटाबेस दैट दिस एम्प्लॉय वाज लीविंग ऑन दिस डेट, एंड जो भी आपका एग्जिट को मैनेज कर रहा है, ही इज गोइंग टू राइट, ही और शी इज गोइंग टू राइट द कमेंट्स कि दिस वाज द कमेंट गिवन बाय दैट एम्प्लॉय। Yes, important. Yes. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ या क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को टर्मिनेट कर दिया या रिजाइन बंदे ने दे दिया, तो उससे रेजिग्नेशन डेट फॉर एग्जांपल आज 17 है और उनके लास्ट वर्किंग डे हमारे पास 18 था जी, और वो 18 को नहीं आते जी, और आप एज एचआर आप बिजी थे या किसी वजह से आप उनके डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर सके,
एग्जिट इंटरव्यूज या उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ये वो चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सके, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई मिस आप नहीं थे एचआर के, तो इस प्रोसीजर को फिर मैम आप कैसे अकोमोडेट कर देते हैं, या इस प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कैसे हो? इसी के लिए मैंने आपको कह रही हूँ ऑटोमेटेड एचआर जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके लिए उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, पर्सन कैन डू इट ऑनलाइन। तो ऑटोमेशन जो एचआर की है दैट इज द थंब रूल कि इससे ही आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अनलेस अगर नहीं है आपके पास तो व्हाट यू कैन डू इज, बिकॉज आप तब तक रिलीज नहीं कर सकेंगे उसकी मॉनेटरी बेनिफिट्स जब तक सिग्नेचर्स नहीं होंगे। सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल द पीपल, call that employee that one has to come to the company and for exit interview। but उसमें ये जो प्रोसेस इसीलिए हम डिस्कस करें कि इस प्रोसेस को एंड डेट तक ना रखें। एग्जिट इंटरव्यू जैसे अगर आपने कल आप पहले से उसको डेट इन्फॉर्म करेंगे एम्प्लॉय को कि इस दिन आपका एग्जिट इंटरव्यू है, जरूरी नहीं आप लास्ट डे पे करें, यू कैन हैव इट अर्लियर एज वेल, बट कीपिंग द एम्प्लॉय इन लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हाउ वुड यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग इन, मतलब जो भी आपका एग्जिट है वो कैसे इजी हो सकेगा या कंप्लीट हो सकेगा इन योर प्रेजेंस। एंड इफ यू आर नॉट प्रेजेंट तो प्रोसेस डिले होगा। तो एवरीबडी हु इज वर्किंग वुड वांट टू हैव प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। डिले तो कोई इमरजेंसी होगी तो हो सके करेगा, वरना नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज दिस थिंग, बट ऑटोमेशन। I have a question. लेकिन मैम जी मैम प्लीज कैरी ऑन सर, आप प्लीज बात कीजिए, मैं बाद में करती हूँ। लेकिन मैम देखें, मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस किया, नॉट इन माय ऑर्गेनाइजेशन बट आई एम एक्सपीरियंस इन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। मुझसे किसी ने पूछा था कि इसमें उनको प्रॉब्लम आया था कि मैम लोगों ने रेजिग्नेशन पुट किया, इन लिeu ऑफ नोटिस कंप्लीट किया, सारा कुछ किया और उनको सैलरी भी ट्रांसफर कर दी गई, सारा कुछ हुआ। लेकिन मैम जिस वक्त उनको उन्होंने कंप्लीट करना था प्रोसीजर एज दे गेट द सैलरी, उन्होंने टोटल आपको से कॉन्टैक्ट भी खत्म कर दिया, सारा प्रोसीजर्स खत्म कर दिया और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं किया आपके साथ। तो मैम इस तरह के सिनेरियोज में ठीक है ऑटोमेशन ऑफ दी मतलब एग्जिट इंटरव्यू में या से पहले कर लें, उसमें देखो उसमें प्रोसेस ये है कि सैलरी जब भी आप रिजाइन करते हैं तो आपको सैलरी आपकी जो फाइनल सेटलमेंट है उसके साथ मिलती है। आप सैलरी वैसे ट्रांसफर नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी बेशक आपने 25th को आपने फॉर एग्जांपल आपने रिजाइन किया और नेक्स्ट 25th को आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया, बट आपको सैलरी आपकी फाइनल सेटलमेंट के साथ मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच you can get your documents and your work from the employee as well। और दूसरी चीज ये है कि this is how you can manage things। I think this thing can be done if you take your salary to the फाइनल सेटलमेंट। अभी फाइनल सेटलमेंट तभी हो जब आपकी सब चीजें आपको मिल जाएं और उस मंथ की सैलरी आप फाइनल सेटलमेंट के साथ रखें। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आपकी लास्ट मंथ की सैलरी फाइनल सेटलमेंट के साथ रखते हैं। I want to ask something. It's just a scenario. For example, if the employee is working for the organization, it could be education or something else. अगर वो वहां से जा रहा है, वो exit management के हम बिल्कुल last process में है and we are just signing the documents and everything. What is the legal grounds और इसकी ethical grounds क्या, अगर हम employee से ये sign करवाते हैं contract या किसी भी पेज पे कि आप same organization या business को join नहीं कर सकते till the tenure of 1 year. What is the ethical grounds of this? ये जो clause है इसकी ethical grounds क्या है? देखो ये इसका करता है नहीं करता? इसका एथिकल ग्राउंड ये है कि देखो कोई भी चीज, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन राइट एनीथिंग इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाई एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट इफ यू हैव साइंड दैट देन यू अग्री विद दैट। आपके एग्रीमेंट के ऊपर आपने उसको साइन किया है ना। अगर आपने बगैर पढ़े साइन किया तो आप बेवकूफ हैं, आपने क्यों साइन किया? और अगर आपने साइन किया तो आपने उस पर एग्री किया है कि येस आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होता है। तो जिस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया वो आप पे अप्लाई होगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट, वी कैन नॉट बाउंड द एम्प्लॉइज। हम इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट की, हां एग्जैक्टली, दिस इज नॉट एथिकली राइट। आई थिंक सो। This is not ethical, not at all ethically right, not at all ethically right. But being an employee, अगर हम उसको साइन कर रहे हैं तो we are part of that unethical work. We agreed to that, isn't it? Yes, obviously, if we are signing the document, we are the part of that as well. Yes. Yes, so we agreed to that. But ethically, it is not right.
Otherwise, ethically it's not right. Ethically तो देखो, you cannot bound anyone. You cannot bound anyone. You cannot bound anyone. You can just bound कोई ऐसी चीज है कि जैसे आप जब तक आप maybe you can say कि जब तक आपका exit नहीं होता तब तक आप ना करें. You can't bound the person to work somewhere else. One has to work somewhere else. But if that person has signed that document, तो वो उसमें agree कर रहा है. उसे whether it's ethical or unethical, the person agrees to that. ठीक है, अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिया और वो जॉब क्विट करने के बाद ही और शी हैज जॉइंड द सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम बिजनेस को उसने ज्वाइन किया है, तो कंपनी इसको सू कर सकती है यहाँ पे? कंपनी देखो सू नहीं कर सकती इस बात के ऊपर, लेकिन आप उसे पकड़ जरूर सकते हैं कि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया होता है. तो जिस वक्त अगर आप उसे लीगैलिटीज में जाएंगे तो लीगल डॉक्यूमेंट तो एक लीगल चीज है, उस पर क्वेश्चन जरूर होगा या नहीं होगा, उसको काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द लीगल सिस्टम. बट आप उसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं. लेबर लॉज विल सपोर्ट द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉई? एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉय. ओके. लेकिन मैम मेरा एक सवाल है मैम, अगर हमें वी रिक्वायर्ड द पर्सन, हमें उस बंदे की जरूरत है और वो बंदा कहता है जी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करता, लेकिन वी आर लुकिंग, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, देन व्हाट वी गोना डू? तो फिर आपको नॉट गेट द साइन द डॉक्यूमेंट? नहीं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको ट्वीक करना पड़ेगा फॉर दैट पर्सन. अगर वो पर्सन, अगर कोई शख्स है वो उस आपकी क्लॉज को एग्री नहीं करता और एंड यू वांट दैट पर्सन टू जॉइन यू, देन यू हैव टू चेंज दैट क्लॉज फॉर हिम. लेकिन ये तो बाइसेंस है विद द अदर एम्प्लॉइज कि आप एक के लिए कॉन्ट्रैक्ट को टेल्ट कर रहे हैं और बाकी क्यों कार्य करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन? फिर लेट देन एम्प्लॉय गो, आप उसको ना हायर करें क्योंकि वो आपकी, हाँ, फिर वो आपके उससे कॉन्ट्रैक्ट से एग्री नहीं कर रहा, फिर डोंट हायर दैट पर्सन बिकॉज वो तो आपके उस क्राइटेरिया पे, एलिजिबिलिटी पे नहीं आ रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है. That's why you need a clever HR manager to manage the things. Yes. जो ऐसे स्मार्ट हो कि वो उस लाइन के ऊपर साइन करवा लें. वो करवा लें और फिर जब करवा लें तो फिर आप we did many times. मैम अगर कोई क्लेवर, लेकिन मैम देखें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो सही प्रोफेशनल होते हैं, उनको सिर्फ आपका जॉब या मनी नहीं होती, बेनिफिट्स होते हैं उनको. फ्यूचर में आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपसे जो आपकी कंपनी देती है. तो आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए मैम, कितनी देर लगती है कमेंट करने में लिंक्डइन के अंदर एक बंदे के नीचे. there are number of ways to get that. लेकिन जो HR हमारा है ना, अभी देखो समझने की जरूरत ये है कि HR is a very new field. It's just about 20 years. So it is evolving. जब हम पहले शुरू हुए थे तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो ये काम करते थे, HR डिपार्टमेंट तो था ही नहीं. अभी जाके कंपनीज को रियलाइजेशन आई है कि HR डिपार्टमेंट, there should be a separate HR डिपार्टमेंट. इससे पहले कोई HR डिपार्टमेंट नहीं होता था. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी नहीं है. वो खुद ही हायरिंग करते हैं, खुद ही फायरिंग करते हैं, खुद ही प्रोसेस करते हैं, खुद ही कंपनसेशन, खुद ही बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर ही कर रहा होता है. तो when those companies, those who have HR departments, तो they are progressive companies. सबसे पहले तो इस चीज को समझना जरूरी. They are progressive, that is that they have those departments. बाकी when you talk about multinational companies, जैसे मैं आपको comparison दे सकती हूँ with local companies and international companies. I worked with an international company and their HR was very, very, very employee friendly. But at the same time, when there was a lot of check-ins, lot of accountability from the HR, और जब उनके contract खत्म होते हैं तो they don't even think once. जैसे हम बता रहे हैं redundant, हम consultancy, they don't do that. They provide best of their best during your service, but when they are done with your service, they say thank you, goodbye. So there are different ways of dealing it. So HR is new and it is evolving, and it depends on kind of organization where you are working. कुछ companies हैं those जो आपको इतना accommodate करते हैं कि अगर आप redundant हो जाएं तो आपको पूरे 3 साल हैं तो 3 साल की सैलरी दे देंगे. कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 1 महीने की भी नहीं देंगी. So there are different processes. मैम आई डू एग्री विद यू कि HR को इवॉल्व होते हुए टाइम, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी हैं जिन लोग HR को समझते ही नहीं है. और they think HR is just to hire and fire. They don't understand the processes of HR. तो HR सिर्फ hiring and firing के लिए तो नहीं है. HR employer का भी है और HR employee का भी है.
ये सबसे Ma'am, बड़ा they डिफरेंस just think HR is only to give the salaries only. Yes. HR part is to give salaries. आप ये एम्प्लॉयर की साइड से देखो तो भी, एम्प्लॉय की साइड से देखो तो भी, एम्प्लॉय भी कहता है कि जी एचआर का काम है, एचआर का काम है, एचआर का काम कि उसने ये देना है, उसने ये, एम्प्लॉयर कहता है एचआर ने नहीं किया, एचआर ने नहीं किया, एचआर ने नहीं किया। तो एम्प्लॉय जो एचआर है दैट इज वन डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयर का भी है और एम्प्लॉय का भी है, और दोनों ही उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक बात मैम, वन हैव टू बी अ बैड कॉप। मेरे ख्याल से एचआर वाले ज्यादा बीच में होते हैं इस बैड कॉप वाले, क्योंकि दे हैव टू बैलेंस द थिंग्स। हाँ, यू हैव टू बैलेंस। सो जो एचआर है वो बैड कॉप में ही ज्यादा टाइम रह जाता है, क्योंकि उसने दोनों को बैलेंस करना है। अगर एक को करेगा गुड कॉप ही रह जाता है, क्योंकि उसने दोनों को बैलेंस करना है। उसने एम्प्लॉय को भी खुश रखना है और एम्प्लॉयर को भी खुश रखना है। एक टाइम एक के साथ अच्छा, दूसरे टाइम दूसरे के साथ अच्छा। दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बुशरा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज। Yes, ma'am. I have a question related to exit management interview. I have seen in a company कि employee जो है वो basically group head पे allegation लगा रहा होता है that I am not feeling comfortable with group head. He is targeting me. I have an issue with the behavior of group head. तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? What should be the देखो, अगर तो दिस इज द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, आपने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ द लाइन मैनेजर का जो कंडक्ट है, तो हियर कम्स योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देन एचआर का काम है टू गेट इनटू दैट सिचुएशन एंड डू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे जाएं, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करें, उसके टू वे कम्युनिकेशन करें एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग। तो अगर रेजिग्नेशन के टाइम पे वो ये कह रहा है, तब तो इस चीज को ऐसे एड्रेस किया जा सकता है जैसे हमने पहले बात की थी कि रेजिग्नेशन को हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये इस सिचुएशन में फिट होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट पे वो कह रहा है कि जी, या फिर अगर डिटेल्ड है कि ये मेरी मैनेजर से बन ही नहीं रही इसलिए मैं ये जॉब नहीं कर सकता, व्हाटएवर द रीजन, तो सबसे पहले इसमें आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आती है। अगर उससे रिजॉल्व हो जाता है देन इट इज डन। इफ नॉट, देन एग्जिट के टाइम पे अगर ये बता रहा है, वो पहले उसने कभी नहीं बताया, तो दैट जस्ट इट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर अ कंपनी, फॉर दैट लाइन मैनेजर, जिसको आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आपकी वजह से एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, यू हैव टू मेंड योर बिहेवियर और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें एम्प्लॉय तो चला जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर को ये फायदा हो जाएगा कि वो अपने उस लाइन मैनेजर को के साथ डिस्कशन में जा सकेगा अकॉर्डिंग एज पर हिज परफॉर्मेंस। ओके मैम, आई हैव एन अदर क्वेश्चन। लाइक जैसे एक एम्प्लॉय जो है वो रिजाइन कर देता है और उसका लाइन मैनेजर ये चाहता है कि मैं जो है, ये मेरा एम्प्लॉय जो है मतलब कॉम्पिटेंट है, मैं इसको ना जाने दूं, कि क्या हम उस बंदे का रेजिग्नेशन जो है वो 1 मंथ या कुछ इस टाइम पीरियड, इससे भी ज्यादा हम उसका रेजिग्नेशन रोक सकते हैं? रेजिग्नेशन आप इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। आप उसको कितना अच्छा कन्विंस करते हैं, आप उसका रेजिग्नेशन खत्म भी करा सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द एचआर एंड द मैनेजर कि वो कितना अच्छा उसको कन्विंस करता है और उसको रोक लेता है, तो रेजिग्नेशन रुक भी जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑल अपॉन योर कि आप उस एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है उसको कितना अच्छा सॉल्व करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। रेजिग्नेशन रोकने के 2 प्रोसीजर्स भी हैं कि आप उसको, कुछ लोगों से करियर पाथ का इशू होता है, कुछ लोगों को इस तरह का इशू होता है, उनको वो क्लियर गोल्स नहीं होते कि उनका फ्यूचर करियर पाथ किस तरह का है। अगर उनको समझ आ जाए तो यू कैन कंट्रोल इट एज वेल, तो उसको रेजिग्नेशन रोका भी जा सकता है। और वो जो बात कर रही थी कि सीनियर्स की वजह से जो है एम्प्लॉयज या जूनियर्स छोड़ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जूनियर्स जब भी रेजिग्नेशन दे रहे होते हैं तो उसके बीच में ये प्रॉब्लम ऐड करते हैं कि हमें हमारी सीनियर से नहीं बनती, हमें वो सीनियर इतना काम नहीं देते, हम फारिग बैठे रहते हैं, ये है वो। तो आपको उसके बीच में नेगोशिएशन करवानी पड़ती है सीनियर और अपने जूनियर के बीच में। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यू कैन रिटेन द पीपल, दोज आर गुड। अगर आप फील करते हो बंदा ठीक नहीं है, लेट हिम गो। बिल्कुल सही। सो देखिए, जब हम एचआर में बात करते हैं ना, तो एचआर इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट और एक फील्ड है जिसमें कोई एक चीज फिट नहीं होती। इसमें कम्युनिकेशन भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हाउ गुड यू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय, दैट मैटर्स अ लॉट।
और आप उसको कितने अच्छे तरीके से जो भी चीज सही बतानी है या गलत बतानी है, उसको नौकरी से निकालना है या उसको नौकरी में लेके आना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, दैट हाउ गुड यू आर एट टॉकिंग and convincing the person. So this is very, very important rule of HR. अब बाकी तो procedures and processes हैं जिनको आपने follow करना होता है. So today's talk was for about exit management, and we have a good talk and good conversation. If you have any questions, you can just give me send those questions on our group. I can reply you. And thank you so much. And if you have any other question, I have more 5 minutes, तो मैं आप लोगों के reply कर सकती हूँ. Otherwise, thank you. Thank you for the session. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, Fatma. Thank you. Okay. So thank you so much. I'll see you in next session. Maybe next month I have more sessions, so we'll catch up again. Wish you good luck. Thank you.